Very good afternoon and thank you for staying with the public. Yes, we're exactly a day away from the third phase of polls in the state of Uttar Pradesh as we see a war of words from every side. And of course, the biggest election controversy as the BJP has said that SP has a direct link to those convicts of the Ahmedabad blast. Now, we've also seen how Akhilesh has responded. In the meanwhile, tomorrow we will see 59 assembly seats go to polls across 16 districts, 627 candidates in the fray, and over 2.15 crore people who are eligible to vote. We're getting ground reports from many of these constituencies to get a sense of what the voter pulse is like and what are the leading issues on the ground. We have now reached the city of Lucknow, the city of Nawabs as it's called. We're at a very famous tea stall here. It's called Sharma Ji Ki Chai, a very politically charged place in the early morning of Lucknow is also something that we're being told. You know, a lot of people come here for their breakfast, for their early morning tea. Let's get in a word from some of the people who are in fact present here and look at what exactly do they understand, what are the issues that they feel are a part of the reason. And you can see how many people in fact who have gathered here, and they have in fact been coming here since early in the morning, and they have come here for their breakfast, their tea, and let's get in a word from them as to what do they think are the issues. सर, आप बताइए, यहाँ पे हम आपसे बात करना चाहेंगे. हम ये शर्मा जी की चाय पे खड़े हैं. काफ़ी पॉलिटिकली चार्ज माहौल है यहाँ पे. हर सारी बातें होती हैं ऑल अबाउट पॉलिटिक्स. आप बताइए क्या इश्यूज हैं, व्हाट आर द इश्यूज इन लखनऊ दैट यू आर गोइंग टू एज अ वोटर कीप इन माइंड व्हेन यू गो इनटू पोलिंग? I think development of a city, that's the prime issue, and I'll be voting for the candidate, not for the party. So the candidate from my area, I'll be voting for him. What are the other issues? Development in the sense, are you looking at infrastructure development? Are you looking at health infrastructure development? What are some of the major issues, because COVID also had a lot of impact on the state? It's an overall development, I think. It's not a particular kind of development, it's overall, from infrastructure to hospitals to everything else, healthcare and everything. It includes everything. You're a working professional. What do you do? I'm a lawyer. You're a lawyer. All right. So let's also get in a word from some other people. Sir, what do you do? Where are you from? I'm a chartered accountant. I'm from Shahjahanpur. Already voted. And what are the issues that you thought kept in mind when you went into voting? And also, what are the issues overall in Uttar Pradesh? Do you think that the voters are really interested in and the parties need to address? See, what I think कि सोसाइटी में बहुत डिवाइड बढ़ गया है हिंदू मुस्लिम. सो व्हाट आई थिंक कि हमें चाहिए हार्मनी इन द सोसाइटी. ये मेरा पहला पॉइंट है. बाकी सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा अगर हम लोग एक साथ को एग्जिस्ट करना सीख लें. दैट्स व्हाट आई थिंक. हिंदू मुस्लिम डिवाइड से ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव डेवलपमेंट और इन सारी चीज़ों पे फोकस ज़्यादा चाहिए. हाँ, इंफ्रा तो हो ही रहा है, इंफ्रा तो नो डाउट हो रहा है, बट हमारी सोच अगर बदल जाएगी तो हम को एग्जिस्ट करने लगेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा. So you can see early morning people. Let's get in a word from some others as well, because you see so much of hustle bustle here, so many people who have gathered here early in the morning and with so many opinions of the entire state of Uttar Pradesh as well. Let's get in a word from some other people as well who have been standing here, who've been waiting here, and the pulse of the voters is something that we get to know when we are in the city as well. Sir, आप बताइए, आप उत्तर प्रदेश से? जी. इलेक्शंस आ रहे हैं, चुनाव आ चुके हैं. आएगा तो ये होगी ही बस. और क्या आपके पास में मुद्दे हैं, आप सोचते हैं कि डेवलपमेंट? केवल सुरक्षा बहुत बड़ा मुद्दा है. भ्रष्टाचार, करप्शन और लॉ एंड ऑर्डर. आपको लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर कुछ काम? आम आदमी को और क्या चाहिए? यही चाहिए ना. हमसे और किसी चीज़ से क्या मतलब है? हमको लॉ एंड ऑर्डर चाहिए, करप्शन चाहिए, यही देखना है ना. तो आपको लगता है कि इस सरकार ने वो सारी चीजें खरे उतरे अपने प्रोमिसेस पे? दिख तो यही रहा है. अब अंदर खाने क्या है ये तो नहीं पता, लेकिन दिख वही रहा है. जो दिख रहा है वही, जो दिखता है वही बिकता है. सर, आप बताइए, आप भी उत्तर प्रदेश से? जी हाँ, जी हाँ. यहाँ पे वोटिंग करने जाएंगे लखनऊ से? बिल्कुल बिल्कुल लखनऊ से. क्या करते हैं सर आप? मैं डॉक्टर हूँ. आप डॉक्टर हैं. तो कोविड में कई सारी चीज़ों पे फर्क पड़ा. हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करते हैं तो उस पर सबसे ज़्यादा फर्क पड़ा. आपको लगता है उसके ऊपर फोकस होना चाहिए अब गवर्नमेंट की तरफ? नहीं, बहुत फोकस दिया सरकार ने, बहुत काम किया है. सब लोगों को वैक्सीनेट कर दिया है और कोविड पीरियड में भी बहुत अच्छी सुविधाएं दी गई. अदरवाइज़ और देशों में देखिए बहुत बुरी स्थिति हुई. भारत ने उसको बहुत अच्छा कंट्रोल किया, खासतौर से उत्तर प्रदेश ने तो कोविड का कंट्रोल बहुत ही बढ़िया किया. और आगे भी हर चीज़ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें बहुत तेज़ी से सुधार हो रहा है.
और कोई खामी आपको लगता है कि इस पे ज़्यादा फोकस हो सकता है अब? हेल्थ सेक्टर की बात कर रही हैं। हेल्थ सेक्टर में देखिए बहुत अच्छा बात ये हुई है कि नए मेडिकल कॉलेजेस खोले गए हैं और नए मेडिकल कॉलेजेस में जितनी सुविधाएं और बढ़ेंगी, जितनी फैकल्टी और आएगी तो और अच्छा होगा। हाई लेवल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो गवर्नमेंट सेक्टर में और बढ़ना चाहिए, आईसीयूज़ वगैरह और बढ़ना चाहिए, अभी उसकी थोड़ी सी कमी है। All right, so you can see health infrastructure, of course, one of the reasons that we had seen with the people that they thought is a part of something that really bothers them, something that needs to be worked on. Let's try to go inside as well because there are so many people. We see so many people very early in the morning, very politically charged, very opinionated. Let's get in a word from them as well because all of them have been here since morning. Let's try to speak to them. आप बताइए सर, आप उत्तर प्रदेश की हैं? जी सर। अभी चुनाव आ रहे हैं, बहुत सारे मुद्दे ध्यान में रखने हैं, तो क्या आपको लगता है मुद्दे आपके दिमाग में हैं एज अ वोटर कि उसके ऊपर सरकार को काम करना चाहिए? बीजेपी सरकार, कोई भी सरकार को क्या आपके पास मुद्दे हैं? क्या वो डेवलपमेंट का है, विकास का है, लॉ एंड ऑर्डर है, क्या इश्यूज? विकास है, लॉ एंड ऑर्डर है, सभी देख के बीजेपी सरकार ही आनी चाहिए। हम लोग सब बीजेपी सपोर्टर हैं, हम लोग प्रचार भी करते हुए चल रहे हैं बीजेपी का। ये देखिए साथ में। अच्छा, सो दे कैंपेनिंग फॉर द बीजेपी एज वेल। और आप बताइए, तो आपको लगता है ये सरकार ने सब सही किया है, इसमें कोई भी गलती नहीं? जी जी बिल्कुल, सबका साथ सबका विकास। लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन संभाला है, औरतों की सुरक्षा की बात की है। बिल्कुल बिल्कुल जी जी जी। Well, we've chanced upon a BJP supporter. Let's also get in some other people who are here. Let's try to understand what are what is in fact the pulse of the voter. Try to understand what are they thinking when they go into voting. This is one of the places where in fact so many people early in the morning have come to have their tea, to also discuss over politics. Let's try to speak to some more people who have gathered here. Sir, आप बताइए, आप लखनऊ से? Yes, ma'am, I'm from Lucknow. I very much am from this town. Abhi, it's going to be election soon. It's going to be voting soon. What are the issues that are you as a voter thinking about? Is it on development? Is it on law and order? क्या आपको लगता है मुद्दे हैं जिसके ऊपर काम होना चाहिए? Well, I didn't see this coming. I wasn't prepared for this either. But 40 साल हो गए शहर में, and with the kind of changes that I've now seen in the administration, प्रशासन में देख रहा हूँ, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर तो कोई भी फाइट नहीं है। आने वाले टाइम में if we have the same system coming back into force, it's not going to be a question at all. Law and order will only improve. ये effect हो ही नहीं सकता at any damn cost, at any reference. But challenges as such are not there, and little bit of teething issues are there with in every system, in every state, in every city. So just that. I personally, as a responsible citizen, I'm very happy with the current setup. So that's how it is. Thank you. So you can see very opinionated, and we're going to call it how the kind of people here have their own political issues. They have their own issues that they want the government to also speak on. This is Sharma Ji Ki Chai, very early in the morning. We're signing off from here. We're showing you all the opinions of the common people here. And as we also get a cup of this tea and we call it a day for this particular area where we're getting the opinions of the voters, we will be bringing you all the ground reports from across Uttar Pradesh as it goes into the third phase of voting as well. With video journalist Bipin Mori, I'm Priyanka Sharma, reporting from Lucknow for Republic. Third phase of Uttar Pradesh polls will begin from tomorrow, and Kanpur, being the financial capital of the state, will be also exercising its right to cast the vote and elect their public representative in the Uttar Pradesh polls assembly. Right now, we are in a rural place called Narayanpurwa in Kanpur city, where there are a bunch of people. We're reporting from a local temple here, and to get the sense of what do the people in the lower section of the society, those who are really really attracted by the scheme, those who are mainly benefited by the poor ridden scheme as the BJP and the current government has been contesting. So we'll talk to them as to what are they thinking, what all issues will they keep in their mind at the time when they cast their vote tomorrow. So we'll go straight to them. कि माता जी, कल आप वोट करेंगी? हाँ जी। तो क्या क्या मुद्दे हैं दिमाग में जिनको रख के वोट करोगे आप कल? तो जो खाना दे रहा उसी को देंगे वोट। अच्छा।
तो खाना और मिला? सुरक्षा, हाँ, खाना मिला, सुरक्षा कर रहा सब चीज का। हाँ। हाँ तो कोरोना के टाइम पे खाना मिला? हाँ मिला, लॉकडाउन में भी खाना मिला, सब कुछ हुआ। सब मिलता हाँ, रहा मिलता आपको? रहा। तो वही सोच के ही वोट देंगे हाँ, आप? वही वोट देंगे। Okay, so you can see that this is one of the main issue with the people over here. We'll move forward and speak to some of the more ladies over here. कि कल आप वोट करेंगी? हाँ, गरीबों को मोदी जी ने भाई वोट दी, वो मदद की है, और मतलब घर वर दिया है, गेहूं चावल दिया है। लॉकडाउन के समय मिलता रहा सब? हाँ जी, हाँ जी। और हाँ, लॉकडाउन में कोई कुछ कमी नहीं रही लगी है। है, फ्री वैक्सीन लगी है। हाँ, 1 साल पूरा राशन मिला। तो और क्या क्या मुद्दे हैं जिन पे आप वोट देना चाहेंगी कि राशन मिला, और दूसरा क्या अच्छा लगा या क्या और आप चाहते हो कि गवर्नमेंट से आपको मिले? हम यही चाहते हैं कि थोड़ी बस महंगाई कम हो जाए, और बाकी तो राशन मिलता ही है। पूरा साल हम लोगों ने अच्छे से खाया, लॉकडाउन में भी मतलब बहुत मदद की उन्होंने, और मतलब सब अच्छा ही किया उन्होंने। Okay, so these are the voices of the rural Kanpur, as this is what they want, this is what they intend, and this is all what they will keep in their mind before casting their vote.